India has been re-elected to the Council of the International Civil Aviation Organization (ICAO) with one of the highest mandates, reaffirming the country's expanding influence and leadership in the global civil aviation ecosystem. The development marks a significant milestone for India's aviation diplomacy and its growing role in shaping international aviation standards and policies. The announcement was confirmed by Union Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu, who highlighted the achievement as a reflection of India's credibility, technical expertise and proactive engagement within ICAO under leadership of Prime Minister Narendra Modi. Union Agricultural and Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan stated that more than 1.51 lakh crore has been embarked under Viksit Bharat G Ramji scheme to boost employment and rural development. He mentioned that workers would now be legally entitled to 125 days of guaranteed employment, an increase from the earlier 100 days, describing the initiative as a progressive step beyond Manrega. The minister explained that the provisions for unemployment allowance has been further reinforced, while the scheme would emphasize water conservation, rural infrastructure, livelihood creation and disaster prevention. He stressed that these measures were designed to build self-reliant villages and transform rural India into a stronger, more resilient economy. प्रिय बहनों और भाइयों, नमस्कार। मनरेगा के नाम पर फिर एक बार देश को गुमराह करने की साजिश हो रही है। भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है विकसित भारत जी रामजी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। मजदूर भाइयों, 100 दिन की नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी है, कानूनी गारंटी। और काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है। मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है। और दूसरी तरफ एक विशाल धनराशि जो प्रस्तावित इसी साल है, वह 1,51,282 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, ताकि रोजगार देने के लिए पर्याप्त पैसा हो और उस पैसे से गांव का संपूर्ण विकास हो। विकसित भारत के लिए विकसित गांव, स्वावलंबी गांव, गरीबी मुक्त रोजगार युक्त गांव बनाने के लिए जल संरक्षण, गांव में विकास के काम, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, आजीविका मूलक गतिविधियों के लिए काम और प्राकृतिक आपदा से बचाने के काम हाथ में लिए जाएंगे। एक बात और, 125 दिन के रोजगार की गारंटी, लेकिन कृषि कार्य के समय छोटे छोटे किसान भाई बहनों को दिक्कत ना हो, इसके लिए भी प्रावधान। ये कानून गरीब के हक में है, ये कानून विकास के हक में है, ये कानून मजदूरों को रोजगार देने की पूरी गारंटी है। विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित गांव का संकल्प पूरा करता है।
इसमें एक और विशेष प्रावधान है। प्रिय बहनों और भाइयों, नमस्कार। मनरेगा के नाम पर फिर एक बार देश को गुमराह करने की साजिश हो रही है, भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। मजदूर भाइयों, 100 दिन की नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी है, कानूनी गारंटी। और काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को। The Delhi High Court has suspended the life sentence of expelled BJP leader Kuldeep Singh Sengar, convicted in the Unnao rape case, and granted him bail. The order was passed by a bench of Justices Subramaniam Prasad and Harish Vaidinath Shankar on December 23rd. Sengar's release was directed upon furnishing a personal bond of 15 lakh along with 3 sureties of the same amount. The court imposed strict conditions, including prohibiting him from entering within 5 kilometers of the victim's residence, threatening her or her mother, and requiring him to remain in Delhi during the bail period. His sentence will remain suspended until the High Court decides on his appeal against 2019 trial court verdict. The Appointments Committee of the Cabinet announced new appointments in the Supreme Court of India through a notification dated 22nd December 2025. It stated that Senior Advocate Devinder Pal Singh has been appointed as Additional Solicitor General of India for a tenure of 3 years. Beginning from date he assumes charge or until further orders, whichever comes earlier. Similarly, Senior Advocate Kanakumedala Ravindra Kumar has been appointed as Additional Solicitor General of India under the same terms. The notification was issued by Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, under the Secretariat of Appointments Committee of the Cabinet, reaffirming these significant legal appointments. Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu announced that quantum computers would be manufactured in Amravati within the next 2 years. He highlighted that the state was moving from adopting advanced technology to producing it, marking a significant milestone in innovation. Speaking at Quantum Talks, he mentioned that nearly 80 to 85% of the component partners were already on board, ensuring that full-scale production would begin soon. He further stated that quantum machines could be expected within 6 months, reflecting the government's commitment to positioning Andhra Pradesh as a hub for cutting-edge technology. The announcement underscored the state's ambition to lead in futuristic advancements and strengthen its role in India's digital economy. Not only machine is coming, why can't we produce a machine? Now with that thought, my Bhaskar is also doing very good work here. He and my Pradyumna, my secretary, both of them, they worked together. Now they called all players. Everybody is prepared to produce quantum computers in Amravati. Almost all 80% or 85% components, partners are ready. Another 15%, there is not a big issue. Within 2 years, we are going to produce quantum computers in Amravati. Not only having machine will have within 6 months, 2 years quantum computers we are going to produce. Next gen skills, that is where AI, ML, cyber. External Affairs Minister S. Jaishankar held discussions with Sri Lankan leaders, including the Foreign Minister Vijitha Herath, Health Minister Nalinda Jayatisa, Labour and Deputy Finance Minister Anil Jayanta, and Deputy Tourism Minister Rowan Ranasinghe. During the meeting, he conveyed that India remained committed to assisting Sri Lanka in its recovery and rebuilding efforts following the devastation caused by Cyclone Ditwa. He highlighted that the talks focused on the practical implementation of the reconstruction package already offered in India,
while also explore additional relief measures to strengthen Sri Lanka's rehabilitation process. Jaishankar emphasized that India's support would continue to play a crucial role in helping the island nation overcome the challenges posed by the disaster. Chief Minister Yogi Adityanath addressed at the annual sports meet of Colvin Talukdars College, emphasizing the importance of discipline, teamwork and dedication in shaping young minds. He stated that sports not only build physical strength but also instill values of perseverance, unity and respect. The Chief Minister highlighted the participation in athletics prepared students to face life's challenges with confidence and resilience. He urged the youth to balance academics with sports as both contribute to holistic development. Adityanath remarked that such events nurture future leaders who will uphold cultural traditions while advancing national pride. He encouraged students to pursue excellence, assuring them that the government remains committed to supporting education and sports infrastructure for their growth. काल्विन तालुकदार्स के इन बच्चों ने किया है और मार्च पास्ट में आपका अनुशासन कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ने का जज्बा ऐसे लगता था जैसे देश की आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर जब भारत का नौजवान कदम कदम बढ़ाए जा इस गीत का गायन करते हुए मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित करता था। आज यहां के मार्च पास्ट में वह दृश्य मुझे देखने को मिला है। मैं सबसे पहले काल्विन तालुकदार्स को इस वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और इस शानदार प्रदर्शन के लिए और उसमें भी बेटियों का प्रदर्शन उनसे भी शानदार था जो यहां पर बालक थे। उन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। इस प्रबंध समिति के अध्यक्ष भारत सरकार के मंत्री और लगातार कई बार से गोंडा लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे कौन कीर्तिवर्धन सिंह जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन में आज आपके इस प्रदर्शन को देखने और यहां के इन बच्चों के शानदार प्रदर्शन के साथ साथ उनकी प्रतियोगिता के छात्र छात्राओं को पुरस्कार देने का अवसर प्रदान किया। काल्विन तालुकदार्स के इन बच्चों ने किया है और मार्च पास्ट में आपका अनुशासन कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ने का जज्बा। BJP MP Basuraj Bommai remarked that Congress legislators themselves were expressing concerns about the lack of development and funding in the state. He pointed out that the KPCC Vice President had written to the party High Command warning that the ongoing chaos over leadership disputes could adversely affect governance. Bommai noted that senior Congress leader Parameshwar had also acknowledged that such conflicts would send a wrong message to authorities. He argued that no government could remain stable under these circumstances, making it possible to function effectively. According to him, officials were left weighing profit and loss rather than focusing on progress, which reflected the overall instability and inefficiency of the current administration. ಖಂಡಿತ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು KPCC ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪತ್ರ ಬರೆದಾರೆ, ಇದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ರಾಂಗ್ ಸಂದೇಶ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸಹಜವಾಗಿ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರೋದಿಲ್ವೋ
ಆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ದುರ್ಲಾಭವನ್ನು ಎರಡು ತೊಗೊತಾರೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬಗೆಹರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ. ಅವರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಗಾಂಧಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಿನ್ನೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಅವರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೈಕಮಾಂಡಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಹೈ ಇದೆ, ಕಮಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ದಲ್ಲೇ ಗೊಂದಲ ಇದೆ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪಾತ್ರವು ಕೂಡ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ರಿ, ಹೈಕಮಾಂಡು ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ Union Minister Nitin Gadkari shared his experiences of visiting Iran alongside Prime Minister Narendra Modi, particularly in connection with the Chabahar Port project. He mentioned that during one of his visits, he has the opportunity to meet the President of Iran. In their conversation, the Iranian President asked Gadkari if he knew the origins of Persian roots. Gadkari admitted he did not, after which the President explained that the Persian route trace back to Lucknow, India. According to Gadkari, the Iranian leader emphasized that Persian culture, history and traditions are deeply intertwined with the Indian and Hindu culture, especially Sanatan. Gadkari highlighted this is a significant example of India's long-standing cultural influence and shared heritage across the borders. ऐसे अनेक समाज आए, अनेक भाषा के लोग आए. हमें इस बात के लिए स्वाभाविक रूप से कभी कभी हमें ही पता नहीं होता. मैं मोदी जी के साथ ईरान में गया था. वहाँ एक चाबार करके पोर्ट है, वो बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, तो मैं बहुत बार जाता था. तो एक बार मैं वहाँ के राष्ट्रपति जी को मिलने के लिए गया, और मिलने के गया तो उन्होंने मुझे बताया, मिस्टर गडकरी, आपको पता है कि हमारी पर्शियन कहाँ से आई? मैंने कहा मुझे नहीं पता है. बोले हमारी पर्शियन जो है वो लखनऊ के पास भारत से हिंदुस्तान से आई है. हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारा कल्चर भारतीय और हिंदू संस्कृति से, सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है. और तेहरान के यूनिवर्सिटी में संस्कृत की चेयर है और ईरानियन संस्कृत पर अध्ययन करते हैं. ये जर्मनी में है, ये अनेक देशों में हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत, योग, विज्ञान, आयुर्वेद दुनिया का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. पर दुर्भाग्यवश बीच के जो काल में जिस प्रकार से हमारी धर्म, संस्कृति, इतिहास, विरासत, हमारे जीवन मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति जो हमारे आधार थे, उसको दूर करके हमें दूसरा ही इतिहास पढ़ाया गया और हम कहते रहे. तो सुंदरराजन जी ने जो बात की, इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन वाली कहानी हो गई. इसलिए संकोच करने की आवश्यकता नहीं है. और ये बात भी जरूरी है कि मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन दो शब्दों में फर्क है. पुरोगामी, प्रगतिशील और सहिष्णु, सुसंस्कृत और सर्व समावेशक समाज की निर्मित और विश्व के कल्याण करने की भावना. हम अधिकारवादी नहीं, हम विस्तारवादी नहीं. हमारे आजू बाजू के किसी भी छोटे देश के मन में इस बाकी लोगों के बारे में डर होगा, और ये डर नहीं है कि भारत आकर हमारी भूमि ले लेगा, क्योंकि हमारे ओरिजिन में, हमारे जीन्स में, हमारे जेनेटिक्स में ये सर्वसमावेशकता है और यही हमारी संस्कृति की परिचायक है. अगर इसमें बीच के कुछ समय में कुछ लोगों ने इसमें कुछ गलत चीज़ें अगर चिपकाई होगी और उसके कारण गलत फहमियाँ पैदा होती होंगी, तो उसको दूर करना भी हमारा कर्तव्य है. छुआछूत, जातीयता, अस्पृश्यता, इसमें कोई आधार हमारे संस्कृति में नहीं है. बाला साहब देवरस जी ने वसंत व्याख्यानमाला में जो भाषण दिया था सामाजिक समता पर, इतना सुंदर भाषण था कि उन्होंने कहा कि जातीयता और अस्पृश्यता अगर बुरी नहीं है तो कोई चीज़ बुरी हो ही नहीं सकती. इतना दृढ़ रूप से उन्होंने इस बात को कहा था. और इसलिए मैं वासुदेव जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारी इतिहास, संस्कृति, विरासत. In a major breakthrough for Odisha's counter-insurgency efforts, 22 Maoists, including 10 women cadres, surrendered before the police in the Malkangiri district. The surrender, witnessed by Odisha Director General of Police Y.B. Khurania,
marked the first mass defection of 2025. The group, carrying a combined bounty of over 2 crore, handed over a cache of weapons including AK-47 rifles, self-loading rifles, explosives and improvised explosive devices. Among them were senior leaders such as divisional and area committee members from Chhattisgarh. Officials attributed the move to the Odisha's government revised Maoist surrender and rehabilitation policy, which offers significantly higher incentives than earlier frameworks, encouraging rebels to abandon violence and reintegrate into the society. In Rome, hundreds of Santas pedaled past iconic landmarks in a charity ride supporting families of children battling with cancer. Motorcyclists dressed as Santa also hit the streets to raise awareness for social causes. Meanwhile, in Venice, the Grand Canal came live with the annual Santa Claus Regatta, where Santas rode decorated boats, spreading joy and festive spirit across the city. It's all like this. Merry Christmas. Beautiful. Christmas spirit filled the streets of Madrid as thousands of people dressed as Santa Claus joined the city's annual Red Cross charity run. Organized estimates more than 10,000 participants took part in 4.5 kilometers race through the city's center, with children dressed as elves adding the festive cheer. Runners described the event as a joyful way to spread positive energy, combining the fun, fitness and charity in the final weekend before Christmas. No se puede volver hacia atrás, tenemos que ir hacia... A shocking incident in Moscow has claimed the life of a senior Russian general, Lieutenant General Fanil Sarvarov, a top officer in the Armed Forces General Staff, was killed when a bomb planted under his car exploded in the city's south. Investigators are probing possible links to Ukrainian intelligence through multiple lines of inquiry remain open. President Vladimir Putin has been briefed and security agencies are under pressure to explain how such an attack could occur in the capital. This marks the third killing of the senior military officer in about a year, raising serious concerns over the targeted strikes against Russia's leadership. Sarvarov, a veteran campaigns in Chechnya and Syria, is being remembered as a key figure in operational training, even as questions mount over the vulnerability of Moscow's high security zones. Training Directorate of the General Staff of the Russian Armed Forces. Investigators confirmed that Sarvarov later died from his injuries.
According to the investigative committee, the explosive device had been planted beneath the vehicle. Russian President Vladimir Putin addressed an informal meeting of the Commonwealth of Independent States leaders, unveiling a new initiative to publish unique archival meetings that document each allied republic's role in defeating Nazism. Putin emphasized the importance of coordinated approaches to global and regional challenges, noting that all the CIS states back a just world order rooted in international law and central role in the United Nations. He also highlighted growing economic cooperation, pointing out the settlements in national currencies between CIS countries now exceed 96%. In the past year, discuss our plans for the future and, of course, discuss pressing issues on the international agenda. As has been rightly noted many times, over more than 3 decades, the CIS has established itself as a reputable regional integration association in which member countries build relations based on the principles of genuine good neighborliness, equal partnership, mutual benefit, respect, and consideration of each other's interests. And that's the end of the bulletin. I'm Sandeep signing off. Keep watching CVR News English.